Hello, Karan Patel. Hello. Good evening. Good evening, Karan. Good evening. Good evening, Karan. How are you? I'm fine, Karan. I'm fine. And how are you? I'm fine, Karan. How are you? Okay, okay. Perhaps you don't want to listen from me. What is up today? Today's blasted daily is the breaking news, isn't it? It is very hot now. Uh, uh, Once again, a blast in Delhi, Chandni Market. Worrisome activity. A worrisome activity, and it is beginning of a very big thing. I don't know what will happen next. How do I know? How do I know, Karan? But the thing is that whatever claim government makes is all false. It is not. It is not secured. Even now, after so many attacks, so many things, it is not secured till now. So, what do I say about this? Only thing I am expecting that the government who promised a Operation Schedule 2 action, I am expecting such an action because they have already committed. Government, Rajnath Singh already told that any action will have the similar reaction to Pakistan. Of course, this one is designed by Pakistan, no doubt about it. So I would expect that some sort of action, like the first one, Operation Sindur, first version of Operation Sindur, will again, we will be able to see again Operation Sindur 2.0. And if I don't see it, then then what I say, what I think is not a big issue. What Pakistan will think, they will think that the government is a Jumla government. What Indians thinks, nobody bothers for that. They can, government can tell lies every left and right and can escape. People are used to it now. Now, but the thing is that if India doesn't take a punitive action against Pakistan like they did in Operation Sindur first part, so the message will be loud and clear to Pakistan that it is a Jumla government. What they say is, uh, Ramziye Masik. Can't can't spell your name. Ram Ye Vasedan. Can't spell your name properly. What a complicated big name it is. Anyway, I was just doing research on the you do research. There are so many people doing research, and nothing is happening. Things are coming back again and again. People losing their lives again and again, and
Government is telling big things. High, high, hunt. Which Geo? Hello, Geo. Tha, tha. Hello, Geo. From which country are you viewing my channel? Geo, from which country are you viewing my channel? I am from India, Kolkata. I am from India, Kolkata. And Geo, from where? Where are you? Geo, from where are you? Oh, you are from Kenya. I see. And perhaps you are a student. Geo, perhaps you are a student. Your profile picture is Newton's. Newton is in your profile picture. Newton is in your profile picture. Apple story. I don't know. I don't know what is the Apple story. I have very little knowledge about mythology. I have very little knowledge about mythology, though I am an old man. But still, I feel no attraction in mythology. Even now, mythology is a very big subject. One should take. No, no, no. I'm a Hindu. Geo, I'm a Hindu. I'm a Hindu. But even then, I don't have very deep knowledge about Hinduism. All, all a religion. I studied less. Mythological books I studied less. Repeat and know about Jesus. You tell me. I know a little bit about Jesus, but I cannot claim it is a very deep knowledge. Oh, oh, only this. I am not subscribe your idea. Only these only words uh, give birth to radicalism. This only thing. You have to accept the others God, other religious gods. You cannot say only. If you say only, that means you are a radical person. It is it is not only. For the Christians, Jesus is the God. I accept it. And for Indians, Hindus, Krishna is a god. We have several gods. Krishna is one of them. Yes, yes. Actually, as per Hinduism, God is Brahma, who has created this universe. But and that Brahma has got no shape, nothing. But we believe to to do regular pujas, we think that God is like us, like a human being. So we uh, think them as Durga, as Kali, as Krishna. These are the all characters we have thought about uh, to pray to God. So this can be easy for us to pray to God, but actually God has no shape, nothing, and that is Brahma.
That is Brahma. So actually, God has no shape, and he or she is omnipresence. Everywhere they are present. He or she is present everywhere. So you can think of a shapeless God and can pray to him, but that is difficult. But if you imagine a shape, suppose it's a Krishna, and if we find Krishna in like a human being, if we start thinking that, then we can pray easily to God. That's why this character has come. um, Different characters like Krishna, Kali, Durga, Ramchandra. No, there are so many. So actually, Hinduism teaches God is one. One God. There is one God. It's called Brahma. And Brahma has got no shape. Whatever it may be, these are all all the second slab of the philosophy, mathological philosophy. But at the top, there is one God. There is one God, Brahma, who is created this universe. Hinduism actually believes this. Only Brahma is a God who created this universe, and he has got no shape. I don't know. Actually, I have not studied it well. I have not studied it well. It may be so. I don't know. I cannot challenge you because I don't know, and I don't have any interest also. I don't have any interest also to know. I am not teaching anything. I told you at the very beginning that my knowledge is very limited. Whatever I know, I told you. I'm not teaching you, neither I want anybody to convert to Hinduism. I have no such plan. So you well, I am not contradicting you. Whatever you think yourself, because I don't have any deep knowledge about these things. So I would expect that you change the topic. I'm not arguing with you in a religious point. Let, let you believe in Jesus and let me believe in Hinduism. We can coexist, I think. We are coexisting in India happily, and we can coexist anywhere, Hindus and Christians. So there is no such issue, and I don't have any plan to quarrel with you. Vedant, there is no evidence of Jesus being a god. Jesus called herself son of God. Acha. Uh, and died like a sister. Jesus couldn't save himself. How that Jesus will save others? Know about Jesus and believe Jesus. But you are a padri. I see why you why you think that you are so big that you can convert a Hindu to Christian. Are you so big that chatting in YouTube you'll convert Hindus to Christians? Is it so easy? So easy. Vedant, you took the charge. चार्ज तो तुम ले लिया भाई. तुम चलाओ. हमारे पास इतना नॉलेज नहीं है. Neither I have any
inspiration. I have no inspiration to talk in this line, in religious line. Okay, okay, okay. Good night. Good night, Joe. He is running away. Actually, he is running away because you have knowledge, Vedant. You have knowledge in this line. I know. I have no knowledge. I have no knowledge about religious texts. I have no knowledge. So I don't want to argue to anybody. Now he has left actually, Vedant. Because you appeared in the scene, now he has left. He is a chap from Kenya. You must have heard. तुम सुना होगा. वो केनिया से है. जो जो केनिया से है. और तुम आते ही वो भाग गया. So Vedant, you must have 10 किलो चावल में क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट किया है इसने. Anand, I don't want to hate anybody, shame anybody. I don't want to do all these things. Let him be a Christian. What is what's the harm? But don't try to preach me like this so that I become a Christian. I'll never do it. I am a Hindu, I'll die as a Hindu. And that is for sure. Nobody can change my religion. It is not a matter of joke that I'll change my religion. What he thinks, I don't know. Why should I be a Christian? Why should I say that only Christianity can? He's saying only. Only means like Muslims. The, the others are all kafirs. Only. Does it mean only? We accept all religion because we do not say only. Only Brahma is the God, or Ramchandra is a God, or Krishna is a God. We don't see it. There are so many gods. Maybe in other religion there may be God, but because we can accept all the religion, so we are so calm. We are so calm. But what I am thinking that because there is a commitment long before that anything happens from Pakistan in India will trigger off Operation Sindhu 2.0. So it is committed by the government. Rajnath Singh told, and probably PM also told that it is not over already. Operation Sindhu is not over. It is still going on. We are observing situation. If anything goes wrong, we may again attack.
So what do I think? Today night there will be an attack on Pakistan. Some more missile will go launch. What I'm telling, if you don't do it, Vedant, the problem is because government has already committed this thing publicly, Pakistan must have noticed it. Suppose we people of India, if we people of India thinks that government is doing nothing, government doesn't matter. It doesn't matter to government what we think. What people of India thinks, government does, think is that doesn't matter because they sometimes will, after some time they will say it was a jumla. But when Pakistan will think, started thinking, the government of India what it says is jumla, nothing serious, then it is very difficult to manage. You know, now since they have done something here in India, they have to face the consequence, as was committed by the government, as committed by Rajnath Singh and all other big leaders. So there should be Operation Sindhu 2.0. No, no, this is all. This is a ये सब बातों की बात है. सब कंट्रोल है गवर्नमेंट के पास. वो सब बोलने के लिए बोलता है, सब कंट्रोल नहीं है, सब है कंट्रोल. ऐसा कभी होता है? गवर्नमेंट दे दिया सेना को, कभी नहीं देगा. कंट्रोल अभी भी गवर्नमेंट के पास ही है. लेकिन गवर्नमेंट जो कमिट करके बैठा है ना कि हम ऑपरेशन 2 में जाएंगे अगर कोई पाकिस्तान हरकत करेगा तो पाकिस्तान तो हरकत कर लिया, चैलेंज कर लिया गवर्नमेंट को. अब गवर्नमेंट के पास तो कोई ऑप्शन बचा नहीं है बिकॉज दे ऑलरेडी कमिटेड बिफोर हैंड. अगर नहीं किया, अगर नहीं किया, तुम छोड़ो कि इंडियन लोग क्या समझता है, इंडियन सिटीजन क्या समझता है, उसको लेके मोदी जी का कोई चिंता नहीं है. वो आदमी भी जानता है कि गवर्नमेंट ऑफ एंड फेंकते हैं. तो लेकिन जब पाकिस्तान समझ जाएंगे कि ये फेंकू गवर्नमेंट है, तब तो मुश्किल होगा, हम लोग का प्रेस्टीज चला जाएगा. नाउ इज कम्स टू द क्वेश्चन ऑफ आवर प्रेस्टीज, गवर्नमेंट इंडिया's प्रेस्टीज. We must strike, and we are when we must strike to Pakistan. We have got no other option to avoid it. Yes, I know, I have seen the TV. 8 people have been died and 24 injured. No, these figures have. You have a big list. I told if we do not act now, this time if you do not act, then Pakistan will think the government of India is a feku government. You have to do that. No other option left. Because the action line was determined long before. Any disturbance from Pakistan will trigger Operation Sindhu 2.0. Again, a peculiar argument.
Congress government make it possible to bifurcate Pakistan to give birth to Bangladesh. 60% people, 40%, 60% land area. है ना Vedant? What is the answer? You are saying Congress never have gone for a revenge. You told, na? Congress, what Congress did, it broke Pakistan into two parts. One is Bangladesh and the other one is Pakistan. Is it not a big thing? नहीं नहीं what you are saying, don't go back to it. You said that Congress never have taken any revenge. Congress has taken serious revenge. But, but Modi ji has every possibility to, every scope for the last 11 years to take back POK, to make Baluch free. These are the actions he can take because he had 56 inch chest. Because he has got 56 inch chest, she could have taken POK into India, March, March POK to India, make it possible, and can liberate Baluchistan, Khyber Pakhtun. But he hasn't done anything. All story. These are all story. These are all story. If you want to believe, believe it. We know what was happened that time. Uh, I was I was big enough to understand all these things. In 71, I was big enough. Maybe you have not uh, born at that time. In 71, you may not born. You may not have. You may not have your birth in 71, but I was big enough to understand everything. What Hindu says is a line of thinking they have. But that doesn't mean that is the only thing. Mujibur Rahman became prime minister by an election of both Pakistan, both sides of Pakistan. But uh, yeah, story. तुमको बोलना मुश्किल है. तुम समझते नहीं हो. एक तो पेपर जब चलाना होता है कुछ गल्प गल्प भी लिखने पड़ता है, कुछ स्टोरी भी लिखने होता है. अगर सब कुछ सच लिखेगा तो एक पेज का पेपर होगा. स्टोरी है बोल के वो 10 पेज हो जाता है. क्या बोलते हैं. ये तो यही तो काम है. डिफरेंट आदमी का डिफरेंट व्यूज लगा देते हैं. सब एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट करता है. पेपर में देखेगा एक आदमी ऐसा बोलता है, दूसरा कुछ बोलता है. जो बोलता है सब छाप छाप देता है. ये तो ये हिंदू का तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. ये सच को दिखाना है. कोई कुछ बोलता है तो वो छाप देता है. अब आदमी को समझ लेना है वो सच है कि रॉन्ग है. हाँ, सच है कि झूठ है, ये आदमी को समझना है. जो रीडर है उसको समझना है. अब तुम जो तुम्हारा मनपसंद है वो उठा के बोलने लगोगे तब तो मुश्किल है. तुमको अच्छा लगा कि ये न्यूज ऐसा छपा है, इसका अगेंस्ट में भी 10 न्यूज आया होगा. ऐसा ही होता है. ऐसा नहीं होने से पेपर का साइज 10 पेज का नहीं होता. पेपर का साइज जो 10 पेज वाला होता है ना वो ऐसा ही होता है. बढ़ाता है, चीज को बढ़ाता है. पेपर वालों ने, तुम्हारा चैनल वालों ने झूठ भी दिखा देता है, सच भी दिखा देता है. तुम आप समझ लो कौन सा झूठ है कौन सा सच है.
I know about Lord Mountbatten. माउंटबेटन वॉज ए ज्योतिषी. ही वॉज ए ज्योतिषी. इसलिए वो बोल दिया कि 25 साल बाद ये होगा वो होगा. एस्ट्रोलॉजर था माउंटबेटन. माउंटबेटन के बारे में हम सोचता है, वो कैसे, उसको कैसे पता हुआ कि ज्योतिषी था? Was he a astrologer? Was he an astrologer? How did he know? How did he know? Mountbatten was a soldier. How can you say all these things? A soldier. He was a governor, but he was not an astrologer. वो तो एस्ट्रोलॉजर नहीं थे ना. उसको क्या पता? असली में तुम कांग्रेस का कोई क्रेडिट नहीं देगा बोल के ये सब पिकुलियर आर्गुमेंट ले आते हो. कांग्रेस जो किया है, इंदिरा गांधी जो किया था, यू डोंट allow to give that credit to her. So you are talking all these things to divert the thing. These are not these are not things. These are out of context. Whether Congress has done anything good or anything bad, that was the question. Congress had made Pakistan any good or any bad? That is the question. In Pakistan issue, what they did. Mountbatten, what Mountbatten says is not important. It is all partition and everything was done by Mountbatten, uh, Jinnah, and they are the they are the persons though the idea of partition brought into. Mountbatten, Jinnah, they are the person and supported by RSS. RSS was in support of this thing, partition, because RSS wanted a Hindu land and Jinnah wanted a Muslim land. That was the thing. And now, if you want to accept it, accept it. Don't want to accept, don't want to accept. I'm not going to argue with you. No, no, no. Mountbatten is the mastermind. Mountbatten is the mastermind who who actually gave the plan to Jinnah for make such a claim that they should have a Muslim state, and that was accepted by RSS because RSS wanted India to be an Hindu state, but ultimately it was not a Hindu state.
So RSS has the fight with Congress government to make it a Hindu state. Till now, that fight is going on. RSS want to see India as a Hindu state and Jinnah as a Pakistan as a Muslim state. So this partition of India uh, was accepted by both RSS and Jinnah. Now you are blaming Congress because that's the right position for BJP to divert attention. And ये तो पॉलिटिकल है, पूरा पॉलिटिकल चीज है. Everything is fact. All those things are all fact. But only thing is that because BJP is now in power, they don't allow to go any judge, any investigation further. So once BJP is not there in power, all these things will come out. I'm telling you, everything is right. There is a commission in Bofors. Ekdam pakka. There was a commission in Bofors and enjoyed by Ambani's and everybody. So it is fact. And what Hindenburg said, that is also fact. But only thing is that because BJP is in power, they will not allow any investigation to go on. Yeah, yes, yes, maybe that may be, but in 21st year from now, that means around 46, 2046, this judge will, this inquiry will go on and everything will come to light. I'm sure how Judge Loa died, how uh, how this Godhra happened, everything will come out. Judge Loa died, peculiar state, how one of the BJP minister, Padekar, how Padekar died, uh, all these things will come out. How Amit Shah got clean sheet, that will also come. How Amit Shah got clean sheet from court, how the judge was colluded with Amit Shah to bring her, bring him outside the jail. He was in jail for 90 days. Nothing like that. Did Sonia Gandhi was the prime minister?
Did Sonia Gandhi was prime minister last time when Congress was in power? Was Sonia Gandhi the prime minister last time when NDA when Congress was in power? They bought Manmohan Singh. They bought Manmohan Singh as prime minister. If Congress wins, that can happen again. If Congress wins in coming election, then that can happen again. Rahul Gandhi will not be the prime minister, neither Priyanka. Some third person who is not a political person can be prime minister. Exactly same in BJP. There are so many leaders in BJP more capable than Modi and Amit Shah, but they are not allowing anybody to come up. That is the same. That is called politics. Ah, ah, ah. Who is the chief minister of Gujarat? Is he a puppet? The chief minister of Gujarat, is he a puppet? Huh? You're too young, you don't understand. Everybody wants power, making puppet and everything. It is so. It is true that Manmohan Singh was controlled by Congress party, but you must be sure that Manmohan Singh was the most capable person in India to be a prime minister. Even after those controls, what Manmohan Singh have done is remarkable. During his tenure, what Manmohan Singh has done is remarkable. I want to see repetition of this thing. Some bureaucrat, some learned person should be at the top. Congress is not winning, and that is the fact. But if at all Congress comes to power, we are talking about a situation when Congress comes to power. We are talking about that only. If Congress doesn't come to power, then all this conversation has got no meaning. Congress has to come in power. In that case, what will happen? I am talking about that. So if Rahul Gandhi cannot bring Congress into power, then it will not be. Congress has to come to power. But politics is same in both the quarter. What Congress is doing, BJP is doing the same thing. Amit Shah's son has become so big, he is the ICC president. He knows nothing about cricket, nothing knows nothing about anything. Only his qualification is Amit Shah's son. That is the primary goal of BJP to destroy Gandhi family. Because Gandhi family is a family who keep Congress is united. Congress is a very big party, na? So and Democratic Party. So to keep them united, it is required. This sort of thing is required. Like Gandhi family should be at the top. These are required, and BJP knows that very well. So long Gandhi family is there, you cannot write off Congress Party. Congress Party will be there. So they are trying their best to decimate Rahul Gandhi so that Congress Party broke, vanish. But that will not happen. Congress, Gandhi family will be there and Congress will remain. Maybe they are in reduced power now,
they may regain again. That also knows by the BJP. People may turn the table any moment. People may turn the table any moment. Yes, 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 yes. Ah, I know, I know. What you are doing is right. But you can think a government of coalition. You must think a government of coalition where Mamata Banerjee will support Congress party at center to prevent BJP to come into power. Is it not possible? Is it not possible? What do you think? Politics is not so easy. It is true. Congress is no more here in Bengal, not in Bihar, not in UP. But the persons, those who will win there in this state, they will support Congress. That is enough for Congress to be in power and preventing BJP to come into power. That can be done. So people can do anything. Hello, Alok Kumar. Hello, Alok Kumar. কোথায় থাকো ভাই আজকাল? কোথায় থাকো আজকাল ভাই অলোক কুমার? কোথায় এখন? এত মুঙ্গেরে নয়, আগের দিন বলছে মুঙ্গেরে ছিলাম। আগের দিন মুঙ্গেরে ছিলে, আজকে কোথায়? दे में दे में हाँ दे में वो तो जो भूल होता है उसी से सीखता है ना आदमी। जो भूल होता है ना उसी से आदमी सीखता है। तो भूल किया ना, ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी जो बोला था प्राइम मिनिस्टर तो नाटक करता है ना, वो तो ड्रामा ड्रामाबाज। वो कोई प्राइम चीफ मिनिस्टर जो बार बार जीतती है, इतना बार पीपल रिप्रेजेंटेटिव है, कब से सात सात बार जीता है एमपी, तो आदमी जो उसको वोट देता है, ये दीदी और दीदी बोलने से वो आदमी को भी थोड़ा अपमान होता है कि नहीं होता है? तुमको क्या लगता है? तुम तो पॉलिटिक्स बहुत अच्छा समझते हो। बोलो। दीदी और दीदी बोला मतलब जो आदमी उसको जिताया है, जो वोटर उसको जिताया है, उसको भी वो मॉकिंग करता है। वो क्या करेगा? वो तो अल्टीमेटली उसी को अपना ही गड़बड़ कर देता है सब। आई नो, आई नो, आई नो वेदांत, व्हाट यू आर सेइंग आई नो। बंगालीज नोज एवरीथिंग। वो तो ड्रामा जानती है ना। बंगालीज मोदी का ड्रामा जानते हैं। वो जो दाढ़ी बढ़ा लिया था, याद है? रविंद्रनाथ बन गया था, तो आदमी हंसा है ना उसको देख के। तुमका बंगाली को ऐसा ही समझता है क्या? है? वो जैसे ही दाढ़ी बढ़ा लिया आदमी हंसने लगा। वो वोट के लिए दाढ़ी बढ़ा लिया। अरे बाप रे। हैं? मोदी का बात बहुत बोलो, वो ड्रामाबाज है। बहुत ड्रामाबाज का ड्रामा करता है, दिन भर ड्रामा करता है, ड्रेस बदलते हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। Worst prime minister I have seen. Have got no quality. दिन भर कैसे पावर में रहा ये, इसके लिए सोचता है, देश के लिए नहीं। अरे प्रेसिडेंट नहीं होगा, उसको पता नहीं है ये। वेदांत को पता नहीं है। ये सर मुंबई केस पता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट हुआ था। ये सर मुंबई केस में जहाँ कुछ गाइडलाइन दिया गया है सुप्रीम कोर्ट से,
what are the situations that can invite 356? Article 356 can be revoked, can be can come into force in which situation? There it is clearly says for these small things they cannot topple the government. So after that judgment, this issue has been gone out. कांग्रेस यूज टू डू दिस थिंग्स. कांग्रेस भी तो ऐसा ही करता था ना, आदमी को गवर्नमेंट को चुने हुए गवर्नमेंट को फेंक देता था कांग्रेस. ऐसा करते करते एक दिन एसआर मुंबई गवर्नमेंट को फेंक दिया था. एसआर मुंबई शायद कर्नाटक गवर्नमेंट में था, जो अपोजिशन में था, उसका गवर्नमेंट को हटा दिया था कांग्रेस. अब तब सुप्रीम कोर्ट में गया था, सुप्रीम कोर्ट कुछ जजमेंट दिया था, वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट. वो जजमेंट का बेसिस में ये 356 लगाना भी बहुत टफ हो गया. नहीं, आसान नहीं है, नॉट पॉसिबल. तो ये जो तुम लोग ख्वाब देखते हो ना कि प्रेसिडेंट रूल होगा, प्रेसिडेंट रूल ऐसा नहीं होता आजकल, उतना आसान नहीं है. सेंट्रल गवर्नमेंट का इच्छा अनुसार प्रेसिडेंट रूल नहीं होगा. अगर ऐसा होता ना बहुत पहले हो जाता. उतना दिन देर का ही करता. हाँ, मोदी पावर के लिए एक नहीं करता. अगर संभव था 356 तो आगे ही कर देता. क्या जरूरत है इतना वेट करने का? They have their Rajyapal, governor, they have their governor. Governor will give a report. Law and order is mm, very low, very risk under risk. Law and order position is very bad. वो उसको बोलेगा कि तुम रिकमेंड कर दो 356. गवर्नर 356 रिकमेंड कर देगा और सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री एक्सेप्ट कर लेगा, प्रेसिडेंट के पास भेज देगा, प्रेसिडेंट 356 कर देगा. यही तो प्रोसीड्यूर है. तो क्या नहीं कर लेते आगे? वेट किस लिए करता है? अभी ये वेट किस लिए कर रहा है? बेटा, यू मस्ट बी मैच्योर्ड. हाँ, डोंट टॉक इन दैट वे. ओ 56 प्रेसिडेंट रूल हो गया. प्रेसिडेंट रूल नहीं होगा. प्रेसिडेंट रूल होने का अगर ऐसा ही था, इतना आसान था, तो आगे ही हो जाता. व्हाई दे आर वेटिंग फॉर? नहीं, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट पॉलिटिक्स. वो तुम जो बोलता है ना, तुम एक साइड का चीज पढ़ता है. हो सकता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हो, या कोई कोई तुम्हारे पास कोई दोस्त लोग है, बीजेपी वाला दोस्त लोग, जो तुमको पढ़ाता है वही तुम पढ़ता है. चीज ऐसा नहीं है, दोनों साइड का पढ़ने होगा. इट डजंट रिक्वायर. अरे कोई खेल नहीं है, नहीं वो खेल नहीं है. तुम क्या समझता है प्रेसिडेंट रूल आने से बीजेपी आ जाएगा पावर में? तुमको क्या लगता है इतना आसान है? अगर प्रेसिडेंट रूल मान लो कि प्रेसिडेंट रूल कर दिया, इसका मतलब है पब्लिक बीजेपी को जाके वोट दे देगा? तुम्हारे दिमाग में खराब है क्या? तुम वेस्ट बंगाल के आदमी को क्या समझते हो? है? तुम बंगाली लोग को क्या समझते हो? द मोमेंट दिस गवर्नमेंट will throw out, the moment the Mamata Banerjee government will be thrown out, Mamata Banerjee will instantly become hero. Instantly. Okay, okay, I understand. I understand what you are saying. Yes, yes, SI is going on. SIR is going on. But Mamata Banerjee is keeping pressure so that BJP cannot make any SIR in their favor, cannot do any deletion or omission or introduction at their sweet will. That's why she is keeping pressure, you know. But the right electoral roll
is a requirement of everybody, right? Electoral role. But it is not Bihar, you must mind. This is West Bengal, where is the land of revolution. If you go to the history, you have heard the history, is a land of revolution. Revolution. Okay. So every Bengali understand what to do in this situation. If Mamata Banerjee throws from the government, she will hit the street again. She will immediately hit the street, and people will be after him. All the people will come out of their home. I'm sure of that, and that BJP will not take that risk. These are all bullshit. These are all bullshit. I'm telling you, these are all bullshit. You don't know anything. These are all prochar, propaganda. These are all propaganda. Nothing like that. अरे नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है. प्रोपागंडा है. तू प्रोपागंडा को सच मान ले तो ये तो बीजेपी का प्रोपागंडा है कि ये नहीं रहेगा तो मौका हट जाएगा. ऐसा नहीं है. उतना आसान नहीं है तुम जैसा समझते हो. तो क्या है अरे तुम क्या बोलते हो. तो क्या वो मुर्शिदाबाद में कितना सीट है. कितना सीट है कि मुर्शिदाबाद में. तो ये एक मुर्शिदाबाद मुर्शिदाबाद क्योंकि ये मुर्शिदाबाद है बॉर्डर स्टेट बॉर्डर प्रोविंस. बांग्लादेश बॉर्डर शेयर होता है मुर्शिदाबाद में. सो वहाँ का मैट्रिक्स थोड़ा डिफरेंट है. बट दैट डजंट मीन जे तुम अगर SIR कर लोगे इसका मतलब है जितना आदमी बच गया है सब बीजेपी को वोट दे देगा. ये तो ड्रीम है ना. SIR हो गया समझो 1 करोड़ लोग बाद हो गया जो एक्चुअली था ही नहीं. ज्यादातर था ही नहीं. सतहत्तर हुआ. Target was 200 above, it became 77. Now they are remained with 56, 57. They are remained with 56, 57. The others have already joined with TMC. That figure is not 77 now. ये जो बात बोलता है ना ये सब तुम्हारा लीडर का बात है. लीडर लोग ऐसा बात बोलता था 21 में बोला 24 में सब समय ऐसा बात बोलते हैं. आ गया कुछ नहीं आएगा. ड्रीम लाइक दैट. बीजेपी नहीं आने वाला है. बंगाल में तो आने वाला नहीं है. आई एम टेलिंग यू फॉर फॉर इलेक्शन you need to have a good इंफ्रास्ट्रक्चर. संगठन संगठन जिसको बोला जाता है. तुम्हारा ग्राउंड लेवल संगठन जरूरत है. लेकिन जो एब्सेंट है बीजेपी का जो कुछ भी देखता है सब टीवी में देखता है. सब मुख दिखाने के लिए टीवी में आ जाता है और स्टेटमेंट देता है. प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है. प्रेस को बुला लेता है. ये चीज से इलेक्शन नहीं जीता जाता. ये बंगाल दूसरा टाइप का है. बिहार में ऐसा होता है. एक दफे गया थोड़ा लेक्चर दे दिया सब वोट दे दिया. वो सब यहाँ नहीं होने वाला है. तुमको साल भर लोग का साथ जुड़े रहना होगा. साल भर कभी भी उसको छोड़ के नहीं आने पाओगे. देयर शुड बी अ सेटअप, well organized setup. Those who will take care of every villagers. Huh? I am an old man. What change it will make in my life? But you are totally against it. कुछ कांड करके बैठा है ना. हाँ 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 वही वही सोचो
जितना कांड तुम्हारा ये गुजू भाई ने किया है ना, दिस टू गाइस, गुजराती गाइस, उन लोग जो कांड किया है, जब ये लोग पावर में नहीं रहेगा तब देखेगा क्या कांड किया है, कितना बड़ा बड़ा स्कैम किया है। ये सब जो तुम जो स्कैम के बारे में बोलते हैं ना, उससे कहीं गुना ज्यादा बड़ा बड़ा स्कैम बीजेपी किया है, बड़ा बड़ा स्कैम, बहुत बड़ा। इसका मतलब तुम सोचते हो जितना ऑनेस्ट आदमी है सब बीजेपी में है। और, और जितना डिसऑनेस्ट है सब टीएमसी में है। मोदी जी जीतते हैं, पहला तो एक तो चेंज करके आदमी देखने मांगता था कि क्या होता है चेंज करने से। अब आदमी समझ गया कि क्या हुआ, चेंज करने के बाद क्या हुआ वो समझ गया। लेकिन एक तो अपोजिशन भी तो होना चाहिए स्ट्रॉन्ग। मोदी जी को वोट नहीं देके किसको देगा, यही चीज लेके फंस गया है। जैसा जैसा बंगाल में भी यही चीज है, एकदम सेम चीज है। जैसा सेंटर में है वैसा बंगाल में भी है। ऑपोजिशन बोल के कोई नहीं है, जो है उसको आदमी पसंद नहीं करते। ऑल इंडिया लेवल में भी वही है। कांग्रेस को पावर में देखना अभी भी बहुत आदमी नहीं मांगता है, इसलिए कांग्रेस पावर में नहीं आता। तो और तो कोई है ही नहीं। ऑल इंडिया बेसिस में अपोजिशन कहाँ है, एक ही तो कांग्रेस है, और कोई तो नहीं है। इसलिए कांग्रेस पावर में नहीं है, तो इसलिए बीजेपी को सुविधा होता है। बीजेपी इसको बरकरार रखने के लिए गांधी फैमिली को अटैक करता है, सो दैट कांग्रेस एकदम खत्म हो जाए। जो होने वाला नहीं है, कांग्रेस खत्म, कांग्रेस मुक्त भारत, यही बात बोला था। ऐसा नहीं होगा, कांग्रेस रह जाएगा, किसी न किसी फॉर्म में रह ही जाएगा। हो सकता है कभी गांधी फैमिली से लीड ना हो, दूसरा कोई आ गया, लेकिन कांग्रेस रहेगा। और यहाँ वेस्ट बंगाल में भी है, यही बात है, एंटी इनकम्बेंसी है। हाँ, हाँ। इतना टाइम का बाद सच बात बोला है तुम, वेदांत, इतना टाइम का बाद सच बात बोला है। एक्चुअली जो करप्ट है उसका लिए कोई बैरियर नहीं है, कांग्रेस भी जो है वही बीजेपी है। तुम देखो ना, तुम अदानी अंबानी ये लोग को देखो ना, अंबानी क्या करता था, जितना टाइम कांग्रेस पार्टी था पावर में वो कांग्रेस का साथ था। जैसे ही बीजेपी आ गया वो बीजेपी हो गया। ये वही लेवल में बात बोलता है। हाँ, तो जैसा जैसा इंडस्ट्रियलिस्ट है, जब जो पावर में आएगा उसी का साइड ले लेता है। मस्तान गुंडा जो है वो भी वही है, जब तक जो पावर में है उसका साथ रहेगा। और जो करप्ट आदमी है वो भी वही चीज है, जब तक जो पावर में है उसी का साथ रहेगा। और एडवांटेज लेना 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 चाहेगा, लेने देगा। और जैसे ही उसका काम खत्म होगा वो भाग जाएगा। आई लव बीजेपी, हु सेज इट? वेदांत, are you saying? Ah, you are there. I love BJP. You love, okay, okay, you love. You have the right to love it. No, no, you have every right to love any party. You can love BJP. You will realize after few years what you have done in your young age is not good. Is not good for the country, for you. Arey, I love BJP is not your name. Your name is Vedant. Your name is Vedant. You have changed the name now. I love BJP. You can laugh. I'm not telling you. है ना?
हाँ, लव एंड इमोशन वेदांत है तुम। आई लव बीजेपी तुम्हारा एक सीक्रेट नेम है जो तुम कभी कभी यूज करते हो। एंड सपोर्टिंग बीजेपी is your relaxing exercise, is a relaxing exercise for you. You love to support BJP and tell about BJP's greatness. Yes, you love to tell about BJP's greatness. I always find that people like that, like you are there. It is not, you are not the one person, single person. There are a lot more guys are like you. Okay, okay. What happened? If I really have said that I love BJP, that I love BJP, what will happen? What will change that in that case? क्या चेंज हो जाएगा अगर हम बोले कि आई लव बीजेपी? उसमें क्या चेंज हो जाएगा? इसलिए तो सच है सच रहेगा, ये तुम समझते नहीं हो। आरएसएस बीजेपी इज नॉट ए nationalist party and organization. I'm telling you, they are not nationalist. They are a group of businessmen. They are a group of mm, upper caste people. Huh? And, why I should go to Jogiji? If Jogiji has got any interest to me, let him come to me. No problem. But why should I go? Huh? Jogiji. Their ideology was not loved by people. What was loved that they didn't love Congress at that moment when they came to power. When BJP came to power, people was looking for an alternative. So they got BJP as an alternative. They are not BJP was not being brought into power just for love. BJP came into power as an alternative to Congress because people started thinking that Congress is a corrupt party. That was the thing. Now, 11, how much year? 11 years, 11 years have got. People know that BJP is more corrupt than Congress. So they're astonished. They're astonished to see that BJP is more corrupt than Congress. Not only that, BJP is playing with the. So what? So what? आदमी का क्या भरोसा? आदमी आज बीजेपी है, कल कांग्रेस हो जाएगा, परसों दूसरा कुछ हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। आदमी का बीजेपी का खरीदा हुआ है। आज जो बीजेपी का आदमी है, आज जो टीएमसी का आदमी है, कल दूसरे को वोट दे देगा। तुम क्या समझते हो? हाँ? घंटा आ रही है। आज बीजेपी को जो सपोर्ट कर रहा है, कल दूसरों को सपोर्ट कर देगा। अब तुम देखो ना, तुम देखो ये जो 14 को जो बिहार का जो रिजल्ट आएगा ना, वो देख लेना। आदमी का क्या भरोसा है? तुम कुछ पैसा खर्चा कर दोगे, कुछ कर देगे, पौवा दे देगे, वो उसमें ही हो जाएगा। तुम देख लो क्या होता है 14 तारीख का। 14 तारीख को जो रिजल्ट आएगा बिहार का, वो देख लेना। सो भगवान का हवा है ये सब। तुम्हारा तुम जहाँ रहते हो ना, यूपी में, वहाँ का माहौल ही ऐसा है। वहाँ बीजेपी का हवा है, इसलिए हर आदमी तुम्हारा जैसे ही बात करता है। तुम अगर उसका अगेंस्ट में कुछ बोलोगे तो पिट जाओगे। वहाँ वहाँ अगर तुम बेनारस में अगर तुम अगेंस्ट बीजेपी कुछ भी कहोगे तो पिट जाओगे। तो ये इजी है कि कॉम्प्रोमाइज कर लो भाई। तो तुमको बोलना शुरू हो गया कि बीजेपी अच्छा है, तो तुमको उतना सोचना भी नहीं है बीजेपी अच्छा है कि बुरा है।
क्या जरूरत है तुमको सोचे? सब कोई जो बोलता है तुम भी बोलो, बहुत मजा में रहोगे। वही करता है तुम। कुत्ते को खड़ा कर देगा तो वो भी जीत जाएगा। तो अब तक वो एक्सपेरिमेंट किस किस के ऊपर किया है? हाँ? क्या? वही एक्सपेरिमेंट तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर तो ऊपर तो नहीं किया ना, या होम मिनिस्टर के ऊपर, और कोई मिनिस्टर जिसको खड़ा किया उस हिसाब से, जैसे जो हिसाब तुम लगाए हो कि वो उसी लिए जीत गया है। अरे क्या क्या बोल देते हो भाई। हाँ, तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट कर, तू बोलता है ना कुत्ते को भी खड़ा कर देगा तो जीत जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट किस किस के ऊपर हुआ है अभी तक? मैंने अब हमको तो ठीक से देखने पड़ेगा, जितना लीडर्स है तुम्हारा, उसमें से कौन कौन वही कैटेगरी का है जिसको जीतना नहीं था, लेकिन बीजेपी में खड़ा हुआ बोलते जीत गया। ये सब फालतू बात है, तुम जो बात बोलता है। हाँ वही करो, पॉलिटिक्स मत करो, रिलीजियस पॉलिटिक्स ये सब मत करो। हाँ, रिलीजियस पॉलिटिक्स ये सब मत करो, बेकार की बात है सब। पॉलिटिक्स तो अपने हिसाब से चलेगा, तुम उसका बीच में पढ़ के छटपट छटपट करने लगेगा, लगेगा कि तुम बीजेपी का बहुत बड़ा ये है। कहा अगर तुम्हारे पास कोई प्रेशर आ जाएगा तुम दुम से कांग्रेस हो जाएगा। चलो दुनिया भर का आदमी ऐसा होता है, बड़ा बड़ा लीडर को देखा हम जिंदगी में, जो बीजेपी में था धूम से कांग्रेस हो गया, कांग्रेस में था तब से बीजेपी हो गया। सब होता है। और नीचे में तुम लोग जैसा आदमी है ना, छोटा छोटा 24 साल का लड़का, 23 24 साल का, ये लोग सोचता है बीजेपी, अरे बीजेपी क्या है? आज बीजेपी जो बोलता है कल वही लीडर कांग्रेस में चला जाएगा, तुम जिसको देखते हो। क्या है बोलेगा जय बीजेपी? जय बीजेपी बोलेगा, बोलने से क्या होता है? तुमको जो बोला है समझा है क्या? जो लीडर को आज देखते हो, तुम्हारा लीडर बीजेपी, वही लीडर अगर दूसरा पार्टी में चला गया तुम क्या करोगे? उसका पीछे पीछे चला जाएगा वही पार्टी में। तुम जितना लगाव दिखाते हो ना बीजेपी के साथ, उतना लगाव तुम्हारा लीडर नहीं दिखाते हैं। मुंह में बोलता है, लेकिन एक्चुअल में उतना लगाव उसका भी नहीं है। वो तो अपना फायदा देखता है लीडर, कभी भी कोई भी पार्टी में चला जाएगा। ये कोई, ये खेल तुम देखा नहीं आज तक? डिफेक्शन तुम देखा नहीं? क्या क्या बोलता है? यहाँ बीजेपी का ऑफिस मिलना मुश्किल है वेस्ट बंगाल में, तुम छोड़ो। उसका कोई ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी है। तो कोलकाता में जितना है बस, कोलकाता के बाहर जाओगे कुछ नहीं है। थोड़ा गांव का तरफ जाएगा, उसका कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई आदमी भी नहीं है उसके साथ। सब बात हवा में बात करता है वेस्ट बंगाल में। बीजेपी जो भी करता है हवा में बात करता है।
उतना ही ऑफिस है। सतत तो जीता था, तुमको बोला तुम हिसाब नहीं समझोगे का। अभी 10-11 एमएलए चला गया, वहां से चला चल के ये इसमें आ गया, तृणमूल में आ गया। अब उसका पद बचा है 56-57 बचा है। और इस साल अगर 26 में इलेक्शन होगा, 26 में इलेक्शन में उसका उसका स्ट्रेंथ होगा 30। 30 या 40, इसका इससे आगे नहीं, शायद 40 भी नहीं होगा। Nobody is scared of sir. You're wrong. I told you that's a policy. Policy so that BJP cannot take any chance to make any malpractice in sir. So to gear up their organization, uh, their people, Mamata is aggressive about SIR because he wants nothing wrong should be done in the name of SIR. If अगर ऐसा हुआ कि अमित शाह का इच्छा था कि इसमें कुछ गड़बड़ कर देगा, कुछ वोटर को बात दे देगा, जो लॉयल वोटर है टीएमसी का उसको निकाल देगा, कुछ अपना अपना लॉयल वोटर बीजेपी वाला घुसा देगा, ये सब करने का अगर इरादा था, ममता बनर्जी जो स्टांस लिया उसमें से उससे ये सब करना मुश्किल हो गया। ये करने नहीं सकेगा, उसमें नहीं होगा ये सब। इतिहास पढ़ लो, इतिहास पढ़ लो। तुम चला जाओ काला पानी में, अंडमान सेलुलर जेल में जाओ, वहां तो लिस्ट है, वो लिस्ट पढ़ के आओ पहले, तब समझेगा बंगाली क्या है। इतना वहां जाके सेलुलर जेल में फांसी में गया, सेलुलर जेल में रहा, कितना बंगाली, 90-80% सब जो है ना वहाँ सब बंगाली है सेलुलर जेल में। तो बंगाली जाति तो लड़के ही आया ना हर टाइम, जो भी जिसको भी वो एनिमी पकड़ लेगा उसका इसमें लग जाएगा। गुड इनफ, more than what you did in Bihar, more than what you did in Bihar. Investment is more than Bihar. But in Bihar, double engine government is going on for last 20 years. What you did in Bihar? Hmm? No, what you did in Bihar? Forget about West Bengal. Tell me how much investment gone to Bihar? No, no, forget about West Bengal. West Bengal has got its own problem. I'm not going to discuss all these things. But what about Bihar? In Bihar, for the last 20 years, BJP in some way or other in the government. So there is a double engine government for the last 20 years under the leadership of Nitish Kumar. How much investment BJP has made in Bihar? Nah, one Bengali must see that if it is a double engine government, then normally how much investment comes in that state. Suppose I want to give vote to BJP. Why should I give vote to BJP? Because investment will come into West Bengal. You are saying that Mamata Banerjee failed to bring any investment.
while BJP will come and bring a lot of investment. Now, what are the examples BJP has said for the last 20 years? How much help they have made to eastern states, particularly Bihar, Jharkhand. These are to look into. What they did in Gujarat or Maharashtra uh, is not only thing. What they did in Bihar, the adjacent state of ours, what they did, and ask them, ask the Biharis what they are saying. People are so idiot, you know, Vedant. People are not so idiot. UP is another case. You cannot mix it up with Bihar and UP. UP is a state of their poster boy. BJP's poster boy, योगी आदित्यनाथ. एक्चुअली क्या सिंह है उसका नाम, वो क्या सिंह है, आदित्यनाथ सिंह ना क्या है एक्चुअली. जोगी होगी तो फालतू बात है, जोगी होगी कुछ नहीं है, वो आदित्यनाथ सिंह है, अनमेरिड है, ये बात सच है. तो ठीक है, बिकॉज बिकॉज जोगी आदित्यनाथ इज देयर, मतलब आदित्यनारायण सिंह इज देयर, investment is going on there in UP to showcase UP as a state, double engine state, to showcase UP. So you are giving me the example of UP because your party wants everybody to show UP. But what about Bihar? Bihar is a backward state. What BJP has done for the last 20 years, that is something one had to look into. This is not good actually. They must come to court. Yogiji, what Yogi Adityanath does is not permissible in law. They must go to court first. Court order will come and then will demolish. But he doesn't care of this. All the Indian rules, laws, constitutions. So anyway, again we are doing politics. Don't do politics. What you have told me कि खाने वाले के बारे में बात करेगा बोला था, वही बोलो. खाने वाला बात बोलो, छोड़ो तुम पॉलिटिक्स. तुम बच्चा हो, तुम समझते नहीं हो. जो लोग मेरा जैसा उम्र का आदमी है ना, जो बहुत कुछ देख लिया, तो बहुत कुछ देखने के बाद में हम समझ गया कि सब दिखावा है. सब पॉलिटिकल पार्टी दिखावा करता है. ग्राउंड लेवल में कौन क्या किया वो देखने पड़ेगा. वो सब मुंह से क्या बोलता है उससे क्या होगा. मुंह से तो बोलेगा ही, बाद में जुमला बोल देगा, हो गया, खेल खत्म. तुम वो वहां से नहीं निकल सकते हो, पॉलिटिक्स से नहीं निकल सकते हो. वो मजेदार आइटम है ना पॉलिटिक्स, बहुत मजेदार आइटम है, बहुत अच्छा. ये बताओ मटन पार्टी का क्या हुआ. ये तुम कभी मटन पार्टी, मटन खाने के लिए आ जाओ कोलकाता, मटन खाने के लिए. एड्रेस का क्या जरूरत है. एड्रेस का, हमारा एड्रेस का क्या जरूरत है तुमको. तुम यहाँ आ जाएगा कोलकाता में,
कोई भी रेस्टोरेंट में जाके मेरा नाम लेके खाना खा लेगा। कोई रेस्टोरेंट में जाएगा कलकत्ता का, मटन खा लेगा, मेरा नाम ले लेगा, बोलेगा उनका गेस्ट है मैं, बोल के खा लेगा। कोई भी। I'll tell you the names of the restaurants, good restaurants. तुम बच्चा हो। जोगी जी क्या कर लेगा? जोगी जी क्या गुंडा है? क्या समझते हो? वो क्या कोई माफिया है, गुंडा है? क्या बोलता है? जोगी जी जो करता है उसका मतलब का चीज करता है। यूपी में जो भी कुछ करता है जोगी जी, वो मतलब अपना मतलब से करता है। हमसे उनका क्या मतलब है? कुछ करेगा और तुम क्या बच्चों जैसा बात करते हो? तुम क्या समझते हो? वो जो बुलडोजर से मुस्लिम का घर तोड़ देता है, वो कोई मतलब नहीं है उसमें। ऑफ कोर्स मतलब है। वो हिंदू को इकट्ठा कर रहा है। हिंदू को जैसे तुम बहुत खुश होता है, वो देख के तुम बहुत खुश होता है, ऐसा ही तो करने मांगता है। वही तो मांगता है वो। Jadavs? Why Jadavs? Muslims I understand, but why Jadavs? Jadav क्यों? Jadav क्यों scared है? हाँ? This is something new I've heard. जोगी जी को जादव क्यों डरेंगे? हमको पता नहीं, जादव तो हिंदू होता है। तो अरे बाबा, ये तू और एक चीज बता दिया है। तुमसे तो मैं और एक चीज जान गया। हो हो हो, अच्छा अच्छा, दैट मीन्स ऑपोजिशन को वो मारता है। इसका मतलब ये हुआ वो डेमोक्रेटिक सिस्टम को फॉलो नहीं करता, जैसा कि आरएसएस है। आरएसएस तो हम लोग का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको मानता नहीं है। और योगी आदित्यनाथ ऑल्सो डिसाइपल ऑफ आरएसएस। वो इसलिए वो संविधान को मानता नहीं है। इसलिए अखिलेश यादव का जो सपोर्ट है उसको मारता है। कैसे मारेगा? तुम पावर में हो है बोल के किसी को मारेगा? ठीक है, वो यादव अखिलेश यादव को सपोर्ट करते करने दो, तो क्या हो गया? यू कैनॉट थ्रो मुस्लिम्स आउट ऑफ दिस कंट्री। मुस्लिम्स तुम जो रहेगा या है, वो रह जाएगा। तुम उसको कंट्रोल कर सकते हो, दिखाने नहीं सकते हो। तो योगी जी क्या करते हैं पता नहीं है, मेरा ख्याल से हिंदू को इकट्ठा करते हैं, क्योंकि वहाँ मुस्लिम वोट 10-12% होगा। सो 10-12% he can sacrifice 10-12%. The mathematics is that in UP, Jogi ji can sacrifice 10-12% vote or 13% vote of Muslim. So what he is doing, वो मतलब से करता है। वो मुस्लिम को घर को तोड़ देता है, करता है। मुस्लिम मुस्लिम कोई गुंडागर्दी करता है तो उसको एनकाउंटर कर देता है। ये सब अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज करते हैं, क्योंकि उनको हिंदू का सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं। अब हिंदू का जो सपोर्ट है उसमें से एक तो पार्ट है जो यादव लोग ले लेता है, हिंदू यादव। इसलिए यादव के ऊपर उसका राग है। वो पावर पूरा पूरी पावर एंजॉय करने मांगता है। ठीक है, लेकिन वेस्ट बंगाल में तो चीज नहीं है ना। वेस्ट बंगाल में मुस्लिम का वोट परसेंटेज 28-29%। सो यू कैनॉट रूल आउट मुस्लिम्स। Nobody, not in BJP. So sometimes BJP talk about Muslims,
Sometimes they will, I don't want Muslim votes. So they are confused. Actually, in West Bengal, they are confused. Their political line changes every now and then. Sometimes they think that Muslims are required to win the election. Sometimes they say we do not want Muslims. Only Hindus will vote for us. Yes, yes. Maybe. You are correct. This percentage thing is correct. Percentage thing is correct. So Jogi ji can forget about 17% votes. एंड जो लेफ्ट और वोट रहेगा अगर वो इकट्ठा हो जाए तो जोगी जी को हराना मुश्किल है इसलिए जोगी जी ये सब करते तुम क्या समझते है कि वो जाके बुलडोजर दे के एक तो शो बनाता है कुछ बिल्डिंग गिरा देता है कोई काम हुआ चीफ मिनिस्टर वाला काम थ्रू कोर्ट आना चाहिए रूल ऑफ लॉ शुड बी देयर अगर डिमोलिश करना ही है इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो उसको कोर्ट में ले जाना चाहिए नहीं करता है maybe I don't know. I don't know the detail of the यूपी इलेक्शन हो सकता है तुम जो बोलता है ऐसा हो सकता है अगर मुस्लिम वोट डिवाइडेड हो जाएगा तो अखिलेश को ट्रबल होगा तो अखिलेश को ट्रबल होगा ये बात सच है ठीक 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 बात यूपी के लिए जो तुम बोला ठीक बात है लेकिन तुम समझ लोगे जो लोग पॉलिटिक्स करता है चाहे जोगी हो तुम्हारा जान पहचान का हो कोई भी हो हाँ, कोई भी हो वो अपना मतलब का काम करता है वो जो कुछ भी करता है वो इलेक्शन जीतने के लिए करता है डिमोलिश करता है वो भी जीतने के लिए अगर किसी को प्यार करता है वो भी तुम समझ लो कि जीतने के लिए करता है 100% ऑफ द वर्क is for the political gain. Everything they do. Today's attack in Delhi attack, the today's bomb busting in Delhi. It is true. If it is so, it is true. If it is so, it is true. If the Muslim votes bifurcate, हो सकता है कि अखिलेश हट जाएगा फिर भी आने नहीं पाएगा अब अगर ऐसा हुआ कि बुआ भतीजा एक साथ हो गया पता नहीं क्या होगा इलेक्शन बहुत पॉलिटिक्स बहुत पिक्यूलियर चीज है ओ अगर इसका मतलब क्या हुआ मायावती फिर से इलेक्शन लड़ेगा तुम बोलता हमको पता नहीं है तुम बोला समझा इसका मतलब फंडिंग बीजेपी कर देगा मायावती का फंडिंग बीजेपी कर देगा ओ अच्छा अच्छा दिस इज द गेम मायावती को खड़ा किया बीजेपी मायावती शायद हो सकता है कि मायावती का इच्छा नहीं था लेकिन इतना बड़ा प्राइज मनी दिया है उसको इतना बड़ा अमाउंट ट्रांसफर किया है कि मायावती भी खड़ा हो गया that means OSC will also be funded by BJP. BJP has got a very big fund, no? They can do anything with the help of this fund. Mayawati will always be is sellable person. Mayawati, you can purchase Mayawati, no problem, no problem. You give her money, she will be purchased. So Mayawati will
will join the fray, taking a huge amount of money, maybe 100 crore, 200 crore, and Owaisi. I don't know about Owaisi, what Owaisi will do, but I'm sure Mayawati has got some pact with BJP. When she is coming into politics again, she must have pact. मायावती का क्या है? उसका पास 200 करोड़ आ जाएगा, उसको क्या है, कुछ कैंडिडेट खड़ा कर देने से क्या होगा उसका? देखो, हमको उतना भी जानकारी जरूरत जो ही नहीं, लेकिन हम समझ लिया कि क्या होने वाला है। ये है एक्सपीरियंस। मायावती वो तो बीजेपी का पिट्टू है, और जो रैली बोला 5 लाख लोग आए, वो उसको खर्चा भी बीजेपी दिया है। आदमी तो पैसा से आता है ना। ये अब जो रैली होता है बड़ा बड़ा, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जो भी देखते हो, सब कोई पैसा लेके आता है। ऐसा बात नहीं है कि किसी को पैसा नहीं दिया सब आ गया, ऐसा नहीं है, सबको पैसा देता है। तो वहाँ इतना सारा खर्चा जो है वो बीजेपी किया है, अखिलेश को दिखाने के लिए। ठीक है ना? ये तो पॉलिटिक्स है, यही हम लोग का पॉलिटिक्स है, जिसमें तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, जिसको सोच के समझ के तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये पॉलिटिक्स ऐसा है, पॉलिटिक्स। अरे वो तो सेकंड टीम है, ये तो बीजेपी का ही सेकंड टीम है। वो सब हम जानते हैं कौन क्या लीडर है, वो सब हम जानता है, तो मत समझाओ हमको। मायावती गॉट मनी, a huge amount of money, and he has now come out to support BJP and to draw some Muslim votes to make the BJP's game easy. So I know. में भी सो मानी भी लिया होगा, वो भी ऑफर है। मानी तो जरूर लिया होगा, आई एम श्योर। मायावती का जो नेचर है, वो मानी छोड़ के कुछ समझते ही नहीं है। वो मानी तो जरूर लिया होगा। फिर ये भी हो सकता है, ये ऑफर भी हो सकता है, प्रेसिडेंट करने का ऑफर हो सकता है। और मायावती का जो कैरेक्टर है उसमें से जाता है। मायावती कैन चेंज एनी मोमेंट, एनी टाइम। मायावती कैन चेंज एनी टाइम, एनी मोमेंट, फॉर मनी। So Mayawati must have taken money as well as a commitment of being a president, being the president of India, if helps to BJP come into power. वो तो करेगी। बीजेपी has got CBI, you know, main thing। Mayawati has no other option but to support BJP. Mayawati has got no other rasta, no other way but to support BJP, because he has got a very big case against her in CBI, and BJP may pursue it any moment. Corruption case.
Okay. Hello, friends. Hello, friends. Bugatti. What colors in your Bugatti? What is Bugatti? Huh? Bugatti is a car, isn't it? Bugatti is a car. I don't have any car, man. I'm not that rich. I don't want to, I don't have a car. I'm not that rich. Bugatti is a car. I know. Well, what do you mean to say? Are you going to sleep? Are you going to sleep? Vedant?
You are the lone person now. If you go to sleep, I'll also go to sleep. If you go to sleep, I'll also go to sleep. Because you are the only person now. Okay, okay, go to sleep. This is 11:45, 47. So go to sleep. Oh, 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 oh. You are down with your energy, I think. Anyway, you go to sleep. That will be, that will make it, make you feel good. You go to sleep. So then I am ending the streaming now. Okay. Bye. See. Okay. Okay. Good night. Good night.